famous personality once said, most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. और ये बातों को प्रूफ किया है बिल्कुल सही हमारे आदित्य शर्मा ने, जो हमारे आज के एसएसबी क्रैक टॉक्स का चीफ गेस्ट है। जी हाँ, यही आदित्य शर्मा जो देहरादून में रहने वाले हैं और जो अपने हाल फिलहाल में TES 48 एंट्री से AIR-112 रैंक स्कोर किया है। ये अपने थर्ड अटेम्प्ट में SSB क्लियर किए हैं और जो बिल्कुल भी हाल नहीं छोड़े, 2 बार SSB से रिकमेंडेशन ना मिलने के बावजूद भी। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे SSB क्रैक टॉक्स के शो में आदित्य शर्मा। हाय आदित्य, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. Thank you, ma'am. Nice. Aditya, first of all, I want to thank you for coming into our SSB Crack Talks and also giving your precious time to us so that you can be with us and share your experiences of SSB with our viewers here. So I want to congratulate you on behalf of SSB Crack Talks and SSB Crack Exams for being the All India rank holder 112 in TES 48 entry. Congratulations, Aditya. Hello, everyone. Myself, Aditya Sharma. I hail from Dehradun, a beautiful city in Uttarakhand. And I have done my schooling from St. Thomas College, Dehradun. I have scored 94% in my class 10 and in class 12. My father is a head constable in Uttarakhand Police. Besides, my mother is a housewife. Besides my parents, I have one elder sister and a younger brother. And recently, I have got recommended from 22 SSB Bhopal, and it was my third attempt, and I have scored all India rank 112. Thank you. ओके, सो आप लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स है, उनको पता चल ही गया होगा कि ऑल इंडिया रैंक होल्डर है आदित्य जी और थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में अपने एसएसबी से उनको रिकमेंडेशन मिला है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ आदित्य, दैट हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड? The feeling is like I'm top of the world. Like when you prepare so hard for a particular thing and when you finally achieve it, the feeling is top of the world, above all. अच्छा, जब आपका नाम पढ़ा गया कि रिकमेंडेशन आपको मिल चुका है एसएसबी में और आप ये बात अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स को बताए, तो उनका रिएक्शन कैसा था? My hands, before I would dial the phone to my parents, my hand was literally shivering. I was just about to cry, and the moment I just called my father, and I was just about to cry that I got recommended. So that feeling is beyond all. ओके, तो आपने जैसे कहा कि आपके थर्ड अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला, इससे पहले 2 बार आप ऑलरेडी एसएसबी जा चुके थे, तो इस बार आपने ऐसा क्या किया कि आपको रिकमेंडेशन मिल गया? And the previous two SSBs, when I entered with an recommendation-oriented mindset that yes, I have to do it. I will compete and I have to prove to be the best. But this time, I just went with a good mindset that I will do my best. I will not focus or do any emphasis like I have to prove my certain officer-like quality. If I would have them, they would surely take me. I won't focus anymore on like portraying it now. अच्छा, आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो, तो आपके माइंड में ये थॉट कहाँ से आया कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करनी है? मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था? मैम, बचपन से ही जब जैसे कोई मूवी देख ली, जैसे कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया, तो एकदम से अलग से जैसे गूज बम्स आ जाते हैं ना, एकदम से जोश आ जाता था। और बचपन में अगर मेरे से कोई पूछता भी था बड़े होके क्या बनना है क्या बनना है, तो मैं सबको एक ही चीज तब तो उतना आर्मी की रैंक्स का उतना पता नहीं होता था, तो एक ही चीज बोलता था कि कर्नल बनना है, कर्नल बनना है। ओके, तो आपने ऑलरेडी कहा आदित्य कि इससे पहले आपने 2 बार एसएसबी आप जा चुके थे एंड यू गॉट कॉन्फिडेंस्ड आउट, है ना? और 2 बार आपको कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक फेलियर्स मिला, उसके बाद भी आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते थे कि नहीं इस बार जरूर होगा, इस बार जरूर होगा? ये जो मोटिवेशन, ठीक है, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, if a guy has to go for armed forces, he has to keep one thing in mind that the journey is not going to be very easy. The journey is going to be difficult. So, ma'am, when a candidate or an aspirant wants to join the defense, he has to have one thing clear in his mind that the journey is not going to be very easy.
it's going to be a bit difficult. So when I got to a conference out first, I was just at the Guwahati airport, and when suddenly a notification popped out that the Navy 10+2 BTech entry SSBs will going to be happen in just a month. So I don't have time for all that regret that I was not able to make in that. Though I had time, I just self introspected myself that what are all things which I was not able to do that, and I again entered the SSB. So on it was like that 8th on 4th of October I entered the Navy Tech entry, and on 8th I was conference out. And again I have my TES entry on 15th of October in just a week gap. So I don't have that much time to think about it that why I was not able to do it. But I just in a week I just self introspected myself where all things gone bad, and then we entered the SSB and then played it. So that depression or kind of thing and that motivation kind of thing is always highest. ओके तो जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे एंट्रीज के लिए जा चुके थे, लाइक बोथ डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी आप जा चुके हो जैसे टीएस एंट्री, नेवी 10+2, और आप रिटर्न एंट्री जैसे एनडी एंट्री के लिए भी जा चुके थे। तो इन दोनों एंट्रीज में आपको डिफरेंस कैसे नजर आया? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री वाइज एसएसबी। And the basic difference is in the screening part. Like in if a guy he has to clear the written examination and then he will be going for the SSB. So it's natural that the number of people who have cleared the written examination will be gradually less. And while in case of direct entries where all India rank, like in this time for TES, it was all India rank 3 lakhs, 3 lakhs around. It was all India rank 3 lakhs. So around almost around 10,000 to 20,000 people will surely report at the respective selection centers for the first day. So the screening part and the number of students who appeared on the first day gradually goes up. ओके और उसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोसेस या साइक टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था? No, ma'am. Otherwise, all things are same. But just it's the screening ratio. And ओके if the when the number of candidates for screening is high, the pressure on board is also high. So less number of candidates are also screening because we have a limited infrastructure over there in SSB. ओके तो आप तीन डिफरेंट एसएसबीज में जा चुके हो, राइट? फॉर योर एनडी एंट्री यू वेंट फॉर एएफएसबी गुवाहाटी, फॉर योर नेवी एंट्री यू वेंट फॉर 33 एसएसबी भोपाल, और आपकी ये थर्ड अटेम्प्ट जो टीएस एंट्री के लिए था यू वेंट टू 22 एसएसबी भोपाल। ये तीन एसएसबी सेंटर्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा सेंटर लगा और क्यों? So, ma'am, for me, the 22 SSB Bhopal is the best because I got recommended from that board. So that recommendation board is always a special one for me. अच्छा, ये तीन बोर्ड्स में से तो आपको कोई भी एसएसबी सेंटर ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के ये सवाल होते हैं कि मैम क्या एसएसबी सेंटर वाइज भी रिकमेंडेशन डिपेंड होता है? आपको क्या लगता है? Yes, ma'am, there is a kind of rumor or a myth that a particular selection center is a bit difficult, like Allahabad Center, which we usually hear of that it is the selection center, but it's not nothing like that. People also do get recommended from that boards also. So number of SSBs I have seen that the standards, all the ratings, all the things which the SSS see is all same there. There is nothing different like from board to board कि अगर मैं इलाहाबाद चला गया तो वो तो सब बोलते हैं कि वो तो रिजेक्शन सेंटर है, मेरा कैसे होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके तो आप 22 एसएसबी भोपाल में से 6 कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड, आप वन आउट ऑफ द 6 थे, जहाँ पे 168 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड, यू वर those one of the 6 candidates who got recommended. तो आपने ये मैनेज कैसे किया? आपकी प्रेपरेशन किस लेवल का था जिसके वजह से you became one out of the 6 recommended candidates? मैम आई जस्ट फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। मैं प्रोसेस पे गया, मैंने रिजल्ट की इस बार बिल्कुल नहीं सोची। जैसे पिछली दोनों एसएसबी में मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे पिछली बार दोनों एसएसबी में जब मैं टेट की स्टोरी भी लिखता था तो मैं सोचता था कि कहीं अगर एसएसआर ये तो नहीं सोचेगा। तो इस बार मैंने कुछ नहीं सोचा कि एसएसआर क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। आई जस्ट गेव माई नेचुरल लाइक इन द टेट स्टोरीज आई जस्ट मेड सिंपल स्टोरीज, आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन दैट एंड हाउ वुड आई रिएक्ट एंड एसआरटीज and that I had a good experience of wet practice sets. And in GD group planning exercise, I just performed natural. I just gave good points in my group discussions, contributed to all the group discussion, and helped my group in all that PGT and HGT tasks. And the one most important thing which I would say that my confidence was almost soaring high.
I was never like when I would speak, I would never fumble, or is that no hesitation was there when I used to speak to any particular assessor in my interview also, and in the group task also. So it's that you have to use your full efficiency of the brain. uh, और इंटरव्यू में भी ऐसा ऐसी कंडीशंस भी आई थी जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर सामने से बहुत प्रेशर बना रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे को तो ये भी बोला था कि मैं तुम्हें कभी रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे बच्चे को, और लेकिन मैं तब समझ गया था दे वर जस्ट बिल्डिंग अपॉन द प्रेशर। सो ये प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो होल प्रोसीजर में कभी प्रेशर नहीं लेना होता, और कॉन्फिडेंस। ओके, तो आपने बिल्कुल हेडेक फ्री होके और फुल कॉन्फिडेंस से जाके आपने एसएसबी दिए है ना, दैट्स व्हाई यू थिंक दैट दीज वर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट गिव यू द रिकमेंडेशन पार्ट, राइट? ओके, साथ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एसएसबी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस या किस तरह के टेस्टिंग प्रोसीजर्स एसएसबी में होती है। तो आपका स्क्रीनिंग जो हुआ था उसके लिए आपने प्रेपरेशन कैसे की? लाइक मैम, OIR सेट वो तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, OIR ऑनलाइन सेट्स अवेलेबल होते हैं। आई जस्ट गो थ्रू वन और टू OIR सेट्स। आई हैव क्लियर्ड एनडी रिटर्न आल्सो ट्वाइस, सो आई डोंट हैव दैट मच प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स पार्ट वाज माय गुड, सो OIR doesn't face many problem. For the narration part, I always used to, like at the home also, I used to speak in front of mirror for my practice. Like I used to give a particular time that 1 hour I will speak in front of mirror so that my confidence building and my fluency will increase. एंड फॉर द ग्रुप डिस्कशन पार्ट, लाइक देज आर, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे आप ग्रुप 4-5 बंदे ग्रुप बनाते हैं गूगल मीट पे जूम पे, चलो सोचते हैं आज GD करेंगे, लेक्चरेट करेंगे, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है मैम। अच्छा, तो आपके एसएसबी में कितने क्वेश्चंस ओआईआर से आपको मिला था और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? सेम फॉर पीपीटी एज वेल, किस तरह के पिक्चर आपको दिखाया गया था और आप उस पिक्चर में किस तरह के स्टोरी लिखे थे? मैम, for OIR, we were given two sets, 50 questions each, out of which I attempted all questions. How much was correct, I don't know about that, but I attempted all. So since it doesn't have negative marking, my advice would be that you should go for all. Even if you don't have some time left, you should also do some tukka work also, because we don't have negative marking for that. So, and for the narration part, I just focused because I had practiced a lot for that. And for the PPTT, it was a picture like four people were standing, two of them were shaking hands, and one was congratulating another guy. So it was like a meetup. So my story was a bit different from all people on my screening group. I made a story that it was a reunion of friends. They were old good school friends, and after when they have settled good in life, they decided to meet up again, and they met up all again. So for the narration part, I would also give an advice like when we are in a hall, we are given 30 seconds for writing, for seeing the picture, and 4.5 minutes for writing the whole part. And when these things are over, we are asked to make a line in uh, we are asked to make a line. So in the line, we had few minutes, like 15 to 20 minutes we have before our PPDT narration and GD. So in that part, I would used to do that the whole story which I have written, I have used to summarize it in my mind. मतलब ऐसा है कि मतलब जब नरेशन पे जाता था मैं, हम वक्त तीनों एसएसबी में सभी भी मैं नरेशन पे गया, उससे पहले मैं उस स्टोरीज कम से कम 10 to 20 टाइम्स अपने माइंड में ऑलरेडी बोल चुका था। तो जब मेरे व्हेन आई वाज आस्क्ड टू डू द नरेशन इन फ्रंट ऑफ द एसेसर, सो द फ्लुएंसी and all the things was gradually very, it's like it was very natural. I don't have to do anything much more in that. And many people, like the group made up a story like that. One of the employee, the sales was going down, so the company introduced some new policy. So because of that, the sales of the particular product goes on, and that's why the another man was congratulated. So my what was my story, it was completely different from the other stories. So narration part is one thing, and your group discussion is another thing. You don't have to stick to that कि मैंने ये स्टोरी लिखी है तो नहीं मैं अटक जाऊंगा कि ग्रुप को यही करना है। द एसेसर वांट दैट यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर मैंने एक बार स्टोरी दे दी है तो ये नहीं है कि मैं शांत हो जाऊं, मैं बिल्कुल किसी की सुनूं भी नहीं।
जो मेरे बाद जो around 10 people are also more there who have to narrate the story. I have to listen to their stories also, because the maximum stories जितनी ज्यादा कॉमन स्टोरी होती है वही आपकी हमेशा कॉमन स्टोरी बनती है। अगर 10 में से 3-4 लोगों की स्टोरी एक जैसी हो गई, लोगों ने बोल दिया हमें पॉलिसी में रिफॉर्म करना है, तो हमें तो जैसे ही हमें जीडीबी स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी स्टोरी से नहीं, हम इसी से स्टार्ट करेंगे, सिंस मैक्सिमम ऑफ हैज परसीव्ड अपॉन द थीम ऑफ पॉलिसी मेकिंग, सो वी शुड स्टिक टू दैट। और ये एक पॉइंट आपने बोला, पूरे ग्रुप ने आपकी आवाज सुनी है, तो यही एक इम्पैक्ट आ जाता है एसएसएस पे। और जब भी आप जीडी में बोले तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि अगले बंदे जब बोल रहे हो ना तो वो खुद ही शांत हो जाए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक दूसरों को भी बिलीव नहीं होगा कि हाँ ये बोल सकता है। ओके, सो अभी बहुत सारे व्यूअर्स को ये डाउट्स रहता है स्पेसिफिकली पीपीटीटी जीडी में कि पार्टिसिपेट कैसे करें, हमारा स्टोरी डिफरेंट हो गया दूसरों से तो क्या होगा। तो ये डाउट्स आई होप कि आदित्य जब ने ये सारे आंसर्स, ये टिप्स दिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही टिप्स इन्होंने दिया है। इस तरह ही आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना होता है पीपीटीटी में। थैंक यू आदित्य फॉर योर ब्यूटीफुल टिप्स हियर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द साइक टेस्ट। साइक टेस्ट को लेके भी बहुत सारे व्यूअर्स डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कैसे साइकोलॉजी टेस्ट हो जाती है, क्या लिखेंगे, कैसे इंटरप्रेट होगा। तो आपने आपकी साइक टेस्ट की तैयारी कैसे की और आपका परफॉर्मेंस कैसा था? मैम साइक के लिए सबसे पहले तो जब इनिशियल डेज में था तो जैसे एसएसबी में गया भी नहीं था, तो जस्ट लाइक व्हेन आई वाज अ फ्रेशर आई यूज्ड टू डू वन थिंग, आई जस्ट राइट ऑन गूगल टेट images to get an overview. Tet and images, like there are various channel, like your website also give a detailed story, like how to, we have to write a story, the format, that how we have to go about it, और जो स्टोरी होती थी कि इसमें कैसे परसीव करना है। लेकिन मैंने ये एक चीज देखी कि कहीं कहीं बच्चे उसी स्टोरी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसे ही स्टिक करने की कोशिश करते हैं। तो वो, क्योंकि जो वेबसाइट है वो तो एसेसिबल टू ऑल है, ऐसा तो है नहीं कि वो वेबसाइट सिर्फ आपने ही देखी है। तो वो स्टोरी कम से कम वो 100 से 200 लोगों ने देखी है वो स्टोरी। तो अगर साइक टेस्ट में आप जाके वही स्टोरी लिख के आ जाओगे तो एसेसर को तुरंत पता लग जाता है कि आपने ये स्टोरी कहीं से देख रखी है, तो उसमें नेचुरल नहीं है। हमें सबसे पहले तो साइक स्टोरीज में अपने आप को रखना पड़ता है वहाँ। जैसे वन ऑफ द साइक इमेजेस वाज लाइक दैट अ मैन वाज गोइंग डाउनस्टेयर्स एंड वाज चेकिंग समथिंग इन द हाउस। So I just wrote it that he bought a new house and he was just checking about that all things are fine in the house. I just wrote that a simple story. And उसमें भी कुछ बच्चों ने लिखा था कि घर में नीचे वो आतंकवादी घुसाए हैं, हम वो गए, उन्हें एनडीएवर किया, आतंकवादियों को मारते हैं बच्चे वहां अपने हाथों से। तो ये स्टोरी मतलब हाइपोथेटिकल स्टोरीज नहीं बनानी होती कभी भी। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं। और जैसे कभी कभी ये एक स्टोरी बहुत कॉमन है, आप हमेशा एसएसबी में जाओगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होता है स्टोरीज का। उसमें दो स्टोरी आपको हमेशा ऐसी मिलेगी मिलेगी कि एक रोड एक्सीडेंट हो रखा है, और एक दो स्टोरीज हमेशा ऐसी मिलेगी जिसमें कोई 3-4 लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो मैंने एक और चीज देखी है कि जब रोड एक्सीडेंट होता है, द रोड एक्सीडेंट पार्ट फॉर आई ऑल्सो राइट दैट द मैन वॉज गोइंग थ्रू डेथ, ही rushed the injured man to the hospital, arranged for emergency medicine needs, and like all which I can do personally. बट बच्चे मैंने लिखा है ये सारी चीजें लिखने के बाद लिखते हैं उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कांटेक्ट किया और रोड की ट्रैफिकिंग सिग्नल्स चेंज करा दिए कि ये शार्प टर्न था, यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो पूरे सिस्टम को अवेयर करा दिया। दैट सिस्टम इज सो बिग इन द थिंग, वी कांट डू एनीथिंग एज अ इंडिविजुअल, सो वी हैव टू बी अ बिट प्रैक्टिकल इन आवर अप्रोच। And for the VAT set also, I would advise that more and more practice VAT set, because we only have 15 seconds with us. We have to see, we have to think about it, and only in 15 seconds we have to write. So, like I would say that, for example, a word is drink. We all have seen on TV that drinking alcohol is injurious to health. जैसे ही हम वो ड्रिंक देख लेंगे तो बच्चों के दिमाग में तुरंत वो आता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन वो सेंटेंस ये है कि वो बहुत लोगों ने पहले से देख रखा है, तो इसमें हमारा कुछ इनिशिएटिव नहीं आया। मतलब उसमें वी हैव टू यूज आवर ओन माइंड, लाइक ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, वी कैन आल्सो राइट दैट। So we have to use our brain. And for VAT set, more and more practice is available. Like there are various videos on VAT set. आप यूट्यूब पे डालो वैट प्रैक्टिस सेट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो पूरी बनी बनी 15 सेकंड्स में वर्ड चेंज होता रहता है। तो वैट सेट्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और तो आपको पता भी नहीं लगेगा वो वर्ड्स कब आके निकल भी गए।
And for SRTs, one more pattern I have observed, that if a particular situation is given, then what people do, they used to write in paragraphs, 2 to 3 lines. They are just writing and writing. We don't have to write that much. I would say that during when my medicals was going on, a candidate just came in and asked me that, Bhaiya, I have attempted only 20 SRTs. Then I was like, what should I answer him? He had only attempted 20 SRTs out of 60. That makes a question on his situation handling thing. It's like many students ask that what amount of SRTs which we should attempt. It's not about the number of attempts, it's about your quality. But इतना भी नहीं कि आप 30 से भी कम SRT करके आ रहे हो. मतलब SRT लिखो तो ऐसे लिखो कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 से तो कभी कम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ. For example, a question comes like, no one was listening to your views on group discussions. तो बच्चे लिखते हैं कि we do this. If I was to write this, I just wrote 2 words. He gave valid points, listened to others, and other and cooperated. Only just one line. I just write one line. So all my actions are covered in this one line only. इसमें 3 लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी. तो ये होता है. और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तो वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो सब अपने घर से याद ही करके जाते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों को. अच्छा, बहुत ही डिटेल में आदित्य ने बता दिया कि साइक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए. आई होप कि जितने लोगों को ये डाउट था कि साइक टेस्ट क्या होता है, इसको कैसे हम लोग अप्रोच करें, किस तरह हमारी साइकोलॉजी टेस्ट किया जाता है, आई होप कि आदित्य की आंसर्स, ये टिप्स सुन के, सजेशन सुन के आप लोग भी ऐसी साइक टेस्ट के लिए प्रेपरेशन कर लोगे. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ग्रुप टास्क. अभी बहुत बच्चे घबरा जाते कि ग्रुप टास्क में क्या करना है. मतलब साइक टेस्ट तो प्रैक्टिस कर लेंगे, चलो पीपीटीटी तो प्रैक्टिस कर लेंगे, ओआईआर तो प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में, लेकिन ग्रुप टास्क में जो कि बोथ हमें ग्राउंड में भी करना है और उसमें ग्रुप डिस्कशन होती है, लेक्चरेट होती है, इन सारी चीजों को हैंडल कैसे करें. तो आपने अपने ग्रुप टास्क के लिए कैसे प्रिपेयर किया और किस तरह के फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरी बेस्ट इन ग्रुप टास्क. Like for the group task, first of all you have to have a adequate knowledge of a particular topic. So for that I used to go through the English newspaper daily in the morning. If I am reading an English newspaper, it will covering my three things. First of all, it's giving me fluency in my English, also giving me good vocabulary, and also giving me good points to put on in my group discussions. And besides that, we can use internet and YouTube as a good platform only. Instead of watching shorts, we can also refer to various YouTube channels, which gives us a basic education, like what's going around the world. Like it's my daily habit. Before going to SSB, like the previous 2 to 3 days, I would just spend my whole days watching the YouTube, like what's going around the world, what's all geopolitics is going around the world. Because in GD we always have 2 topics. One is regarding the geopolitics, and one is regarding geopolitics, and one is regarding the basic life. So in geopolitics की पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो तो हमें फोन से भी पता लग ही सकता है. तो फोन में इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से अच्छा है कि यूट्यूब पे वो देख सकते हैं हम. तो वो हमें एक अच्छा भले ही वो पॉइंट्स एक यूट्यूबर के हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हमने सुन लिए, तो वो पॉइंट्स हम जीडी में रख भी सकते हैं. लाइक व्हेन आई जब भी मैं जीडी में जाता हूँ तो मैं हमेशा अच्छे पॉइंट्स देता हूँ. लाइक द होल ग्रुप इज इम्प्रेस्ड बाय मी. सो you have to when you are speaking in a group discussion, it's like that you have to speak with confidence, and you have to give good valid points, like the whole group listen कि हाँ इस बंदे ने अच्छी बात बोली है, इसकी बात सुननी है. तो अच्छा, एसएसएस का भी इस ध्यान. बारे में, ये ग्रुप डिस्कशन जो आप बोल रहे हो, इसके बारे में मेरा क्वेश्चन है कि आपको कौन से टॉपिक्स मिला था जीडी में इस बार. मैम एक फर्स्ट टॉपिक था कि इंडिया जो श्रीलंका को उनके इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प कर रहा है, तो ये इंडिया क्यों कर रहा है, ये इंडिया अपना डोमिनेंस के लिए कर रहा है, एक कोऑपरेशन के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है. तो जैसे मैंने बताया, ये जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड टॉपिक था कि चाइना की प्रेजेंस कम करने के लिए भी कर सकता है. तो इसमें जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में, चाइना डेप्थ पॉलिसी, चाइना डेंजरस प्लान, स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, तो जितना भी हम यूट्यूब पे देखते हैं ये पॉइंट्स हम जीडी में रख सकते हैं उस वक्त. अच्छा, और आपका सेकंड राउंड में कौन से टॉपिक्स थे जीडी में. यस मैम, सेकंड टॉपिक था कि मोर एंड मोर ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन नाउ डेज गोइंग यूथ. So it's like it's more of a lack of physical interaction,
lack of mental capability and lack of all physical. So I went for that lack of physical interaction. तो मैंने उसमें लिखा था कि अगर स्कूल्स को हम पूरा ऑनलाइन कर दे तो हम वो स्कूल्स में जो मजे हम तब करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे. लाइक मैंने इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि जब हम स्कूल बस से जाते हैं वो उसकी अलग मेमोरीज हो जाती है, स्कूल कैंटीन की अलग मेमोरी होती है. तो वो पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो ऑनलाइन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता. तो अच्छा, इट वाज द रिगार्डिंग योर लेक्चरेट, किस तरह के टॉपिक्स आपको मिला था और आपने कौन सा टॉपिक चूज किया? Ma'am, lecturate, I got various topic like I already said, I used to go through various YouTube videos. So I got the topic of India and its neighbor. So India had around 7 to 8 neighbors. So I can speak around 10 to 15 minutes for that. So I just spoke about it. And one more myth I would like to break. Like when I got recommended, many people would ask me, भैया आपने लेक्चरेट के लिए जितनी तैयारी की थी ना सारे नोट्स मेरे को भेज दो फोटो खींच के. ये आई वुड लाइक टू ब्रेक दैट मिथ कि लेक्चरेट it's an important part of your GD, but it's not like that. They are always testing your knowledge. They just want to see a holistic view of your personality. That in future, the man will be handling around 100 to 200 men in the future. He can speak. He can give a command to his man. वो डरता तो नहीं है बोलने में, उसके पैर तो शिवर नहीं करते हैं. और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी कभी जब अटक जाते हैं तो हिंदी में भी लेक्चर दे देते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली देते हैं. So confidence is the most important part which is seen in the lecture. कि आप जब एसएसएस और ग्रुप के सामने खड़े हो आपके पैर तो नहीं कांप रहे हैं. अगर आपके पैर सिर्फ यही ग्रुप डिस्कशन में एक एसएसबी में कांप गए तो आगे तो आपको बहुत सारे लोगों को कमांड करना है तो वो वहां दिक्कत होगी. सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू प्रिपेयर. आई हैव सीन कैंडिडेट्स दैट दे आर जस्ट मेमोराइजिंग द टॉपिक. लाइक ये सीपेक चल रहा है, ये चाइना डेप्थ ऑफ पड़ोसी चल रहा है, स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स, डायमंड ऑफ नेकलेस, सब रट लो. यूएस इंडिया चाइना ये सब रट लो तो ये हो ही जाएगा. And believe me, I have also prepared around hundreds of topics. And whenever I went to the SSB, none of that 100 topics came. So it's like that. Upon that situation only, you have to think around in 3 minutes, and you have to give it very confidently and fluently. डरना नहीं है किसी से. अच्छा, नाउ कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द जीटीओ टास्क, जैसे आपका पीजीटी हो गया, एफजीटी, एफजीटी या कमांड टास्क वगैरह, तो ये सारे टास्क के लिए आपको क्या लगता है किस तरह की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए एक कैंडिडेट में, और आपने आपको फिजिकली कैसे तैयार किया था ये सारे टास्क के लिए? मैम पीजीटी और एचजीटी में तो हमें हेल्पिंग मटेरियल्स के हेल्प से जो एक ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं. तो मेरे पीजीटी में ऐसा था कि आई वाज इन अ रिपीटर्स ग्रुप. सो रिपीटर्स ग्रुप एवरीवन इज मच एक्सपीरियंस. लाइक कोई 5 टाइम्स रिपीटर है, कोई 4 टाइम्स रिपीटर है, तो सबको अपने आप को प्रूव करना ही होता है वहां पे. तो कोई यहाँ से चिल्ला रहा था मेरे पीजीटी में, कोई वहां से चिल्ला रहा था, तो इट वाज लाइक टू मच ऑफ रश. I just kept quiet in my PGT, and why I went for HGT, I gave 2 or 3 valid ideas, and from there only I get into the eyes of the GT. So regarding the physical fitness regime for the physical fitness is much important for your individual obstacle and your group obstacle race. Like it's individual obstacle is the only portion which tests your physical fitness. We have to do around 10 obstacles in 3 minutes. For the physical fitness, I would use to do running in the morning. Running is the most important part which you should inculcate in your hobbies and in your daily routine. Because when we are aspiring to join the defense forces, it will be a part that we have to do for lifetime. Running is the most important part. So your running should be very good in that. And in the HGT, it's like that your ideas matter the most. अगर आपको अपनी बेसिक अप्रोच लगानी है, जैसे हम घर में नॉर्मल रस्सी भी बांधते हैं, तो वो जैसे हम घर में कभी कपड़े सुखाने तो उसके लिए नॉर्मल रस्सी बांधनी होती है कभी ना कभी तो घर में. तो ऐसा तो है नहीं कोई बहुत नई चीज है. तो बस अपने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को. और ग्रुप को बेवजह वो नहीं करना होता. लाइक मेरी पीजीटी में ये हुआ था कि हमारे ग्रुप ने बोला हम लाइक देयर आर 3 ways टू गो टुवर्ड्स द एंड पॉइंट. हमारे ग्रुप ने पूरे ने डिसाइड कर दिया हम इस तरफ से जाएंगे. फिर उसमें से 2 बंदे कहते हैं नहीं हम तो इस तरफ से जाएंगे, और 2 बंदे ऑलरेडी आगे चले गए. एंड बिलीव मी दे वर नॉट इवन सीन बाय जीटीओ इन द एंटायर प्रोसेस. सो यू हैव टू गो विद द ग्रुप. ग्रुप टास्क में मतलब ग्रुप ही हमारा भगवान है, यही मान के चलना पड़ता है ना? दैट्स एब्सोल्युटली राइट.
तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग पर्सनल इंटरव्यू। अगेन इट्स अ मोस्ट फियरसम पार्ट ऑफ एसएसबी, क्योंकि बच्चे जो है काफी डर जाते हैं। व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन था कि पर्सनल इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसे करना होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा था, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद है कि पर्सनल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो आप वो अगर बता देते तो व्यूअर्स भी जो है वो उनको भी आइडिया हो जाता किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और प्रिपेयर कैसे करने होते हैं। Like ma'am, there are when we go to interview, there are two types of question. One is they are personal related, and one is your general awareness, and one is your logical reasoning related. So in the previous two SSBs where I went, I was just asked my basic BIQ form. We have to fill a PIQ form which regarding our qualification, our family background, our son's background, our hobby, and all that. So जैसे ही मैं इस बार टीएस एंट्री में उसमें घुसा इंटरव्यू में, तो मेरे से इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारे पिछले दोनों इंटरव्यू कैसे थे। तो मैंने बोला सर उसमें तो बस मेरे से पीआईक्यू ही पूछा था और कुछ पूछा ही नहीं। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूरे इंटरव्यू में मेरे से पीआईक्यू पूछा ही नहीं। उसने उसने सिर्फ मेरे से वो मतलब वो कभी गिव अप ही नहीं कर रहा था। मतलब इफ लाइक आई यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आई वुड जस्ट आंसर इट एंड यू विल आस्क मी द अनदर क्वेश्चन। इट्स नॉट लाइक दैट। When he was asking me the question, till the time I was not giving up, he was not also not giving up on me. So it was like a basic pressure building tactic. So I was asked for all the first of all you should have the knowledge of the infantry or the arm, which particular arm which you are going to. If like in the TES I went for army, so I had gained some knowledge through YouTube and all the channels. So मैम इंटरव्यू आपको सबसे पहली बात कॉन्फिडेंटली हैंडल करना होता है। लाइक मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब भी वो मेरे पे प्रेशर बनाता था तो उसके बाद एक स्माइल देता था। वो प्रेशर बनाते जाता था और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मेरे से मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसने मेरे से नहीं पूछी हो। ही आल्सो आस्क्ड मी दैट यू कैन सी द रूम। आई सेड यस सर। सो अप्रोक्सीमेटली टेल मी कि व्हाट्स द डायमेंशन ऑफ द रूम। आई सेड लाइक सर इट्स 5 by 4 meters. So he tell me then tell me the dimension of one tile. So I'll tell him approximately I told him the dimension of one tile. He said that I don't like the color of the tiles, I want to change them. So I want to change them. So how many tiles will be required? So it's just a basic mathematical calculation that area of the floor divided by area of one tile, then the number of tiles would come. So it's there simultaneously you have to think and you have to answer. And also he also asked me like the various time zones of the world, latitudes and longitudes passing through India, and all the rivers which passes through India. He also asked me like the place knowledge also you should also have कि आप कहाँ से आ रहे हो, उसका बैकग्राउंड ही आपको नहीं पता है तो आपसे अगर आपको अपना पीआईक्यू ही अच्छे से नहीं पता है तो वो आगे आपसे पूछते भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आप अपने पीआईक्यू इन डेप्थ जानते हैं तभी आपसे अब बाकी चीजें पूछी जाती है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एंड बिलीव मी द मोर एंड मोर प्रेशर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज बिल्डिंग, ही इज बिट इंटरेस्टेड इन यू। सो जितना वो प्रेशर बनाता जा रहा था मैं अंदर से अंदर थोड़ा खुश होता जा रहा था कि यस आई एम गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ। अच्छा, तो व्यूअर्स आप सुन ही चुके होंगे। अगर आपको ऐसे लगता है तो डरिएगा मत, प्लीज सोच लीजिएगा कि आप में इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको स्ट्रेस में लाने की कोशिश किया जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ आई थिंक हैंडलिंग द सिचुएशन कि स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है और स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं। जैसे आदित्य ने भी नहीं किया बिल्कुल स्ट्रेस फील, उन्होंने ये सोचा कि चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आई कैन बी अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, और वही हुआ, उनको रिकमेंडेशन मिला। दैट्स अ नाइस वे ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रेस आदित्य। तो आदित्य आते हैं कॉन्फ्रेंस के पार्ट में। आपका कॉन्फ्रेंस कैसा था और आपको किस तरह के क्वेश्चंस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए थे? आपका जो मतलब सिचुएशन कैसा था कि कॉन्फ्रेंस है, लास्ट डे, अब तो पता चलने वाला है कि रिजल्ट क्या है, तो आपका क्या ही उस दिन सिचुएशन था कॉन्फ्रेंस के टाइम? तो मैम कॉन्फ्रेंस से पहले सब बहुत डरे हुए होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट दिस टाइम जैसे पिछली दो एसएसबी में जाता था कॉन्फ्रेंस से पहले ऐसा लगता था कि अपने आप ही वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिखने लग जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार जब जा रहा था थोड़ा नर्वसनेस थी। जब मैं द मोमेंट आई एंटर्ड आई वाज आस्क्ड टू सिट डाउन। द बोर्ड, द मेंबर्स वर सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल एंड the person sitting right of the major general started asking me a particular questions like where all it went wrong in your previous two attempts and what are you hoping for this attempt, and
what all, how would you rate your performance? From start, if you have to rate your performance, all the three performance, what all you rate? So he asked me some of the questions and also give me some SRT, like if you have to travel from Bhopal to Dehradun and if COVID started, what will you do? So I started answering up, and then he was again and again building some pressure in the conference also. So, and everyone was laughing, like when I was not able to answer, when they were building up the pressure. So it was giving an indication, yes, they have seen something in me, and they are trying to build up, and they have still trying to search on something in me. So I was just the moment I stepped out of the conference out, I knew that this time I would meet. इतना कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली हाई आदित्य। आई मीन वो स्ट्रेस वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा कि स्ट्रेस नहीं लेने का है बिल्कुल, और जितना स्ट्रेस वो दे रहे हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी इनसाइड। इट्स अ गुड वे टू कॉम्बैट द स्ट्रेस, आई वुड से। तो आदित्य, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि एसएसबी में इतने सारे टास्क आपने पार्टिसिपेट किए, इतने सारे टास्क में आपका कौन सा सबसे अच्छा टास्क था, और कौन से टास्क में आपको लग रहा था कि उतने अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? मैम सबसे अच्छा मैं बोलूंगा साइक टेस्ट था, क्योंकि साइक टेस्ट की मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस भी की हुई थी, और उसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। और इंटरव्यू में मांगूंगा थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, द वे ही मोल्ड्स ऑल द क्वेश्चन, द वे ही बिल्ड्स अपॉन द प्रेशर, इट्स अपॉन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। so इंटरव्यूइंग पार्ट वाज अ मच ट्रिकी वन। अच्छा, टैट वैट एसआरटी एसडीटी में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया था? मैम टैट में आई अटेम्प्टेड ऑल पिक्चर्स। टैट में तो वैसे भी कभी पिक्चर्स छोड़नी भी नहीं चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट कभी अगर आप चाहे छोटी छोटी स्टोरी लिखो, लेकिन टैट में कभी वो नहीं छोड़ना चाहिए। एंड वैट आई अटेम्प्टेड अराउंड ऑल वैट्स, वैट बिकॉज आई प्रैक्टिस फॉर इट। एंड इन एसआरटीज आई अटेम्प्टेड अराउंड 50 एसआरटीज। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर ग्रुप। आपका ग्रुप कैसा था एसएसबी में, और आपको क्या लगता है क्या ग्रुप रिकमेंडेशन मिलने में हेल्प करता है? Yes, ma'am. Group is the most important. Like, if I have to compare, the GTO Pass is the most important part of the SSB, because in future you have to be in groups of in the armed forces, and also we have 2 days testing procedure for GTO. So GTO आपके साथ 2 दिन तक रहता है, वो आपको सबसे ज्यादा एसेस करता है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 1-1.5 घंटे एसेस करेगा। और साइक के प्रोसेस में आप तो उसके सामने जाते भी नहीं हो, साइकोलॉजिस्ट के सामने। तो GTO सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका, सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो मैम ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हॉबीज क्या क्या थे, और कैसे हॉबीज आपके हेल्प किए एसएसबी में? क्या कोई हेल्प किया था हॉबीज? मैम जैसे लाइक गार्डनिंग इज वन ऑफ माय हॉबी। सो I just wrote gardening in one of my hobbies, and the interviewing officer was like, "Yes, you might have read somewhere online that it was your hobby, that's why you have written." I said, "No, sir, it's actually my hobby." And yes, ma'am, running. I used to do morning running, so the running also helped me in my individual obstacle part. So if you have to inculcate a particular hobby like running or reading newspaper daily, so inculcate in that a way that in future it will help you through. ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेडिकल्स। ठीक है, बहुत व्यूअर्स होते हैं थोड़ा, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मेडिकल्स, कि मेडिकल्स में पता नहीं क्या टेस्ट करते हैं, या फिर मेडिकल्स के लिए हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ वाज योर मेडिकल्स? आप पे कौन से टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए थे मेडिकल्स में, और किस तरह के टिप्स आप देना चाहते हो उन लोगों को जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है कि वो क्वालिफाई कर जाए मेडिकल्स में? मैम मेडिकल्स में सबसे पहले हमारे ब्लड ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल, देन वी हैव आवर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, देन वी हैव सर्जिकल डॉक्टर सीज अस, देन मेडिसिनल डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, एंड देन डेंटल. So, ma'am, basic advice is that the few of the check that a person can do himself, like the color blindness test and the eye part. A particular guy can test his color blindness himself. Like there are various images in Google, he can test that he's a particular colorblind or not. Knock knees, he can also test. Like the carrying angle part, your elbow is how much bent. That part also a particular man can test. So up the test which a person can do himself, he should always do that. Like before going to the medicals, you should be well prepared for that. And it's also advisable that you should have a proper hygiene process also. Like the airwax also is very important. For if your airwax is not clear, the ENT doctor will not even see you.
So airbags should also be cleared. And it's also advisable that a basic ultrasound or basic medical checkup should be done prior going to the medicals. And it's nothing that medical is it's to be feared of. It's just your body. You can't do anything about it. You can just maintain a proper hygiene and a well balanced diet. काफी अच्छे टिप्स आदित्य ने दिया है। आई होप जो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं मेडिकल्स को लेके वो ये सारी चीजें को टेस्ट कर लेंगे एंड आई होप कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अस, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपको आपके प्रिपरेशन में फॉर एसएसबी कैसे हेल्प किया है? मैम जब भी एसएसबी में जाता था तो उससे पहले you always have a one video like 20 questions asked for army entry and 20 questions asked for navy, 20 questions asked for air force. So I always went through that. And when I was a fresher, I just used to go through some TAT images of yours and how to go about in VAT and SRT. So it in the basic learning phase it helps me a lot. Okay, so my next question is कि आपके प्लान्स क्या है एकेडमी ज्वाइन करने से पहले? क्या क्या प्लान करके रखे आप? Before joining academy, I am learning swimming and I am building upon my physical fitness. Okay, so this is also going very productive. Okay, so अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे व्यूअर्स हैं हम लोगों में से जो डिसअपॉइंटमेंट्स फेस कर रहे हैं क्योंकि उनको एसएसबी में नहीं मिल रहा है रिकमेंडेशन बिल्कुल, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर है, थोड़ा सा डायलेमा है कि क्या होगा आने वाले एसएसबी में। तो उन कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या सजेशंस होगा और आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? अगर आप कोई भी टिप्स या सजेशंस उनको दे दें। And the suggestion is that you don't have to all feel demotivated. If you are going for a particular, you are going for the defense forces, in which you don't have to lose your temper in the most adverse and the worst condition also. You just have to maintain your temper, and you have to just go through the process. It's you don't have to focus on the result. Go focus on the procedure. And it's not like that I will try to portray a particular OLQs. It's like that if you will have it, yes, you can develop some of them, but if you'll have it, you will be selected. So it's not that you during the procedure you are always that I have to show that I have to do this, I have to do this. So it's not like that. So you just should have a good confidence and you should never feel demotivated about it. Thanks a lot, Aditya, for giving such valuable golden tips to our upcoming SSB aspirants. And also, I want to congratulate you once more on behalf of SSB Crack Exams and SSB Crack Talks. Thank you for coming to our show. Thank you for sharing your beautiful SSB experiences with the viewers here and motivating them further. I congratulate you and I hope that you don that uniform that you have been dreaming for so long from your early childhood. Thank you once more and congratulations on our behalf again. Thank you, man. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।